Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, masterpiece, a work of outstanding artistry, skill or workmanship. मास्टरपीस को हम हिंदी में श्रेष्ठ कृति कहते हैं, उर्दू में अजीम काम, तेलुगु में दिव्यమైన पनी. For example, the painting is considered a masterpiece of the Renaissance era. Next word is mature, fully developed physically, mentally or emotionally. मेच्योर को हम हिंदी में पूर्ण विकसित कहते हैं, उर्दू में बालिग, तेलुगु में परिपक्वम. For example, the young artist's work showed a surprisingly mature style. Next word is maximum, the highest or greatest amount, value or degree. मैक्सिमम को हम हिंदी में अधिक से अधिक कहते हैं, उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा, तेलुगु में अत्युन्नत दशा. For example, the car's speed reached the maximum allowed on the highway. Next word is meager, lacking in quantity or quality, insufficient. मीगर को हम हिंदी में अल्प कहते हैं, उर्दू में कम, तेलुगु में तकुआ. For example, the family survived on a meager income during tough times. Next word is mean, unkind, spiteful or malicious, also denoting the average. मीन को हम हिंदी में नीच कहते हैं, उर्दू में बदतमीज, तेलुगु में हीनमैना. For example, his mean-spirited comments hurt her feelings. Next word is meantime, the period of the time between two events. Meanwhile, meantime को हम हिंदी में इसी बीच कहते हैं, उर्दू में इस दौरान, तेलुगु में इंतलो. For example, the repairs will take a few days. In the meantime, you can use the spare room. Next word is meanwhile, during the time between two events. In the meantime. Meanwhile को हम हिंदी में इस दौरान कहते हैं, उर्दू में इस दौरान, तेलुगु में मरोवैपु. For example, the chef prepared the main course and meanwhile the appetizers were served. Next word is measure, a standard unit used for quantifying. measure को हम हिंदी में नाप कहते हैं, उर्दू में मापना, तेलुगु में कोलता. For example, the tailor took her measurements to make a custom fit dress. Next word is meddle, to interfere or involve oneself in other people's affairs without being asked. मेडल को हम हिंदी में दखल देना कहते हैं, उर्दू में मुदाखलत करना, तेलुगु में जोक्यम చేసుకొను. For example, it's best not to meddle in their personal problems. Next word is mediate, to intervene in a dispute to bring about an agreement, to act as a mediator. मीडिएट को हम हिंदी में मध्यस्थ कहते हैं, उर्दू में बीच बचाओ, तेलुगु में मध्यस्थुलु. For example, the diplomat was invited to mediate between the two conflicting nations. Next word is mediocre, of only moderate quality, not very good. mediocre को हम हिंदी में साधारण कहते हैं, उर्दू में दरमियाना, तेलुगु में साधारणा. For example, the film received mediocre reviews and failed to impress the audience. Next word is meditate, to engage in contemplation or reflection, often for spiritual purposes. meditate को हम हिंदी में ध्यान करना कहते हैं, उर्दू में गौर करना, तेलुगु में ध्यानम चेयु. For example, people often meditate to achieve inner peace and mindfulness. Next word is medium, an intermediate state, degree or condition, also a means of communication. मीडियम को हम हिंदी में मध्यम कहते हैं, उर्दू में जरिया, तेलुगु में मध्यमम. For example, oil painting is her preferred artistic medium. Next word is meek, quiet, gentle and easily imposed on, submissive. मीक को हम हिंदी में विनयपूर्ण कहते हैं, उर्दू में नर्म, तेलुगु में नम्रता गला. For example, despite being mistreated, he remained meek and forgiving. Next word is mellow, soft, sweet and full-flavored, also relaxed and easygoing. mellow को हम हिंदी में मधुर कहते हैं, उर्दू में खुशबूदार, तेलुगु में मधुरमैनदी. For example,
The mellow tones of the guitar created a soothing atmosphere. Next word is melody, a sequence of single notes that is musically satisfying, a tune. मेलोडी को हम हिंदी में सुर कहते हैं, उर्दू में तराना, तेलुगु में स्वरमु. For example, the melody of the song lingered in his mind long after it ended. Next word is membership, the state of being a member of a group, organization or society. मेंबरशिप को हम हिंदी में सदस्यता कहते हैं, उर्दू में रुकनियत, तेलुगु में सभ्यत्वम. For example, new members were welcomed into the club at the annual meeting. Next word is memoirs, a historical account or biography written from personal knowledge or experience. मेमोइर्स को हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, उर्दू में तारीखी हालत, तेलुगु में चरित्रा. फॉर एग्जाम्पल, the politician published his memoirs detailing his years in office. Next word is memorial, a structure or object established to remind people of a person or event. मेमोरियल को हम हिंदी में शहीद स्मारक कहते हैं, उर्दू में यादगार, तेलुगु में स्मरणा. फॉर एग्जाम्पल, the town erected a memorial to honor the fallen soldiers. Next word is memorize, to commit information to memory, to learn by heart. Memorize को हम हिंदी में याद करना कहते हैं, उर्दू में याद करना, तेलुगु में कंठस्थम చేసుకొను. For example, students were required to memorize key historical dates for the exam. Next word is memory, the ability to retain and recall information, also something remembered. मेमोरी को हम हिंदी में स्मृति कहते हैं, उर्दू में याद रखना, तेलुगु में स्मृति. फॉर एग्जाम्पल, the old photograph triggered a flood of memories. Next word is menace, a threat or danger, something likely to cause harm. menace को हम हिंदी में खतरा कहते हैं, उर्दू में खतरा, तेलुगु में प्रमादम. For example, the storm was a menace to the coastal areas. Next word is mend, to repair or fix something that is broken or damaged. mend को हम हिंदी में मरम्मत करना कहते हैं, उर्दू में मरम्मत करना या सुधारना, तेलुगु में सरिचेयु. For example, she took the torn dress to the tailor to mend it. Next word is mentor, an experienced and trusted advisor or guide, a teacher. mentor को हम हिंदी में मार्गदर्शक कहते हैं, उर्दू में मुर्शिद या उस्ताद, तेलुगु में गुरुवु. For example, the young entrepreneur sought a mentor to help navigate the business world. Next word is menu, a list of dishes available in a restaurant or meal options. मेन्यू को हम हिंदी में मेन्यू कहते हैं, उर्दू में फहरिस्त, तेलुगु में मेन्यू. For example, the waiter handed us the menu and we began to choose our meals. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.